today we are going to discuss about John Stuart Mill views, J.S. Mill's views on liberty. Now this is an important text of Mill. I think the most important text of Mill, which you will have to study throughout, not just in graduation but also in masters as well. And this is the text which has become more relevant in contemporary times, right? We often come across the word freedom of speech and expression, freedom of association, right? Now these all three ideas, that is freedom of speech and expression, freedom of association and freedom of action, has been widely defended by freedom of speech and expression, freedom of action and freedom of association. These three variants of freedom, has been widely defended by J.S. Mill in his work on liberty. Expression, which includes freedom of speaking, publication, so on and so forth, right? And then freedom of association, and lastly freedom of action. So Mill's advocacy, action, dishum, right? Action. So whatever you do is your act, right? So these three kind of liberty has been widely talked about. आजकल के समय में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लिमिटेशन होना चाहिए, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, आप कुछ बोलेंगे गवर्नमेंट आके आपको अरेस्ट कर लेती है, तो आप कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे हमला है, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, तमाम तरीके की बातें जो आजकल आप लोग सुनते हैं। तो हम देखेंगे कि मिल इन सभी बातों को किस तरीके से रखते हैं। ऑन लिबर्टी जो मिल की किताब है उसमें मिल बात करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में। ऑन लिबर्टी में मिल टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, समझ रहे हैं? ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द लिबर्टी ऑफ अ कम्युनिटी और अ ग्रुप और सो एंड सो फोर्थ, वहां पे वो अभी नहीं जा रहे हैं। वो बात कर रहे हैं क्यों हर एक व्यक्ति को, वाई एवरी इंडिविजुअल शुड बी फ्री। एज यू हैव सीन इन आवर प्रीवियस क्लास, हम लोग बात कर रहे थे वीमेन के स्वतंत्रता के बारे में। ही टॉक्ड अबाउट एवरी वीमेन शुड बी फ्री, राइट, है ना? सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स जो उनकी किताब है, या ऐसे कहिए उसमें मिल ने क्या बात किया है, वुमेन के फ्रीडम के बारे में बात किया है, एंड प्लेस द आर्ग्यूमेंट दैट वुमेन शुड बी फ्री, है ना? लेकिन फ्रीडम और खासतौर से इंडिविजुअल फ्रीडम, ईच वुमेन शुड बी फ्री। ऐसा नहीं करें कि एक ब्राह्मण कम्युनिटी की वुमेन शुड बी फ्री एंड दलित की वुमेन शुड नॉट बी फ्री, ईच वन शुड बी फ्री। सो यू सी कि मिल टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल लिबर्टी। He is primarily focusing upon individual liberty and not the liberty of a community or a group, right? He talks about freedom of association though, that these individual forms an association of, let's say, doctors, of engineers, of traders, so on and so forth, and those associations should also have freedom. But that is different than your ascriptive group or community which you belong to, right? So he is not talking about Brahmins का freedom होना चाहिए, Vaisyas का freedom होना चाहिए. He is not talking about that. Rather, he is talking about individual liberty, that each one of us should be free. Now, why Mill is prioritizing this idea of individual freedom? Why? What do you guys think about that? क्यों मिल जो है इंडिविजुअल लिबर्टी को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और ज्यादा इंफेसाइज करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी पे? बताइए, why Mill focuses on, or why he gives so much importance to, value to individual liberty?
may be correct. Or वो तो रोल्सियन एग्जाम्पल हो जाता है. ऑफ कोर्स दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. रादर आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल लिबर्टी. Liberty is closely associated with what you choose, है ना? To be free is to do what? To choose. And in choosing, you apply your mental faculty. Understand that? चूज करने में आप बहुत चीजों का ध्यान में रखते हैं. एमआरपी क्या है, कब बना है, क्या कंटेंट है, इज इट गुड फॉर द हेल्थ और नॉट. यू गूगल इट, you googled whether ashwagandha is good for the health or not, right? To what extent we should have it. So you see, you are constantly exercising your mental faculty, right? है ना? You do what is right. You are discriminating among the products, right? And here discrimination is not in the negative sense, rather discrimination if you have, let's say, 5 things and you have to choose one, then you discriminate 4 versus 1, right? है ना? So in doing so, you are applying your judgments, your rational faculty, your mental faculty. So liberty as a concept enhances the mental faculty, right? As well as the moral faculty, so that you can be right, right? है ना? What is right, what is wrong, you can do anything. So does that mean you will start smoking in this class? No, है ना? You would not. But you are free to do so. That doesn't mean, but you apply it saying that no, I should not do this, right? You are free to play music, but then you do not play music loud, disturbing others. So that is also a moral question attached to it. It's not just about the freedom of other. Of course it is about freedom of other, but that freedom, if it is taken care from your side, there also is element of morality attached to it, right? Moral element attached to it. So to enhance the moral and the mental capacity of all the individual, liberty becomes an important concept, you see. And the more the people, the more the free the society would be, more there will be mental and moral faculties that will be, up in an upgraded scale in the society. So you understand that, both of you, all of you? So the more the freedom there will be in the society, people would be able to exercise larger mental faculty, and there will be an enhanced morality in the society, right? The reason I gave you the example, liberty is closely associated with not just mental but also moral, moral part of it. Liberty also has a moral element attached to it. So you are free to smoke, but that doesn't mean you will smoke in the class, right? Because smoking will be injurious to other. The moment you think on those lines, you are also becoming morally, upgraded, though you also using your mental faculty. So both of them, both of these concepts work simultaneously when it comes to the idea of liberty. समझ में आ रहा है बात ना सारे लोगों को, right? So liberty enhances the mental faculty. Now what does Mill has to suggest on that? Mill believed that when individuals are free, now listen to this statement carefully. Mill believed that when individuals are free to make their own choices, they use many of their mental faculties. समझ में आ रहा है ना क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हम फ्री हैं,
जाने के लिए, लेकिन हम तब सोचते हैं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये सही है कि गलत है, इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, है ना। द ह्यूमन फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन, जजमेंट, discriminative feeling, mental activity, and even moral preferences are exercised in making choice. When you make a choice, you bring all those elements closely attached to it, है ना. Let's say I'll repeat. When you make a choice, what are the things that you consider? Let's say let's take an example, right? When you make a choice of not to smoke in public place, what are the things that you are, considering upon? No, don't. I mean, of course, moral is one, but then give me the examples. Let's say you are free to drink and come in the class. So that will be what? So that's perception, judgment. You are using discriminative feeling. है ना? फीलिंग, ये करना है और इतने चीजों में से ये करना है, बाकी नहीं करना. So you are discriminating with other things, right? 5 कपड़े हैं लेकिन तुमको लेवाइस लेने हैं, रैंगलर नहीं लेना है, पेपे नहीं लेना है, लेट्स से और भी जो ब्रांड्स है वो नहीं लेना है, तुमको लेवाई लेना, right? So how do you choose levi? You discriminated levi's with other things and then make a comparison of it, applied your judgment, and you are with the idea that no, this Levi's is a good product. So there is a question of perception as well, right? So you apply all this alongside the moral component. Like let's say if Levi's uses, old, or let's say Levi's reuses the fabrics that are thrown, right? Whatever, to make the jeans. है ना? So these all things add to your choices. So you do not make choice in absence of all these elements. है ना? आप randomly choice नहीं बना लेते हैं. Let's say you are choosing a career. You all are preparing for IAS examination. If I assume that thing and ask you a question, why are you preparing for IAS examination? Now give me the reason. You chose to be an IAS officer. Let's say you have chosen that career option for yourself. You're completely free to make choices, है ना? You could have been engineer, you could have been doctor, you could have been, let's say, an activist, but you chose to become an IAS officer, right? And as a result, you are preparing. Now, if I ask you, why do you choose to become IAS officer? What will be your answer then? A, serve the country. Where does it come from? Moral, है ना? और अरे बताओ भाई. Might be money as well, might be money, perception है, पैसा बहुत है उसमें, घूस के पैसे का कोई अकाउंट नहीं है. So you see, you are not making choice in vacuum. That's what my idea is, or that's what Mill's idea is. The choices that you are making over a thing, or let's say options or whatever you are doing, that is not coming out of nowhere. There are a lot of values that are simultaneously operative while you make a choice, right? Most of these values are about use of your mental faculty.
मतलब हाँ, ये सारा फीचर में माइंड ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना। और एक जगह आप जब कहते हैं कि यू आर ऑप्टिंग आईएएस फॉर समाज सेवा, देश सेवा, यू आर एडिंग अ मोरल डायनेमिक्स टू इट, है ना, राइट? सो यू सी चॉइस which is deeply attached to the idea of liberty or freedom to choose, है ना, translated into operation of what? Mental and moral faculty. So Mill is of the opinion the more you will exercise this choice, the more it will increase. So mental faculties are like muscular faculty. You go to the gym every day, right? You will become a bodybuilder, right? Because you practice, you train your muscle each day to take the dumbbells and do like this, do like this and that, and then do lift, what is that called? Lift क्या बोलते हैं उसको? Lifting, weight lifting, right? If you do it every day, your muscle will automatically be trained and then it will grow. So if you apply mental and moral faculty to make choice every day, which is a part of the liberty, your mental and moral faculty will grow. समझ में आ रहा है बात ना, कि जैसे आप जिम करने से आपका मसल बढ़ता है, एक्सरसाइज करने से आपका बॉडीली ग्रोथ होता है, मस्क्यूलर ग्रोथ होता है, उसी तरीके से आप जब अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके चीजों को चुनते हैं तो उससे आपका मेंटल और मोरल फैकल्टी में इजाफा होता है। तो अगर सभी लोग स्वतंत्र रहेंगे, बहुत सारा चीज आ जाता है उसमें, नैतिकता, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेकिंग राइट जजमेंट्स, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, है ना, मुझे पी के ड्राइव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। So these are what? I mean, they all are integrated with moral and mental both. They are interconnected with each other. It's not separate खांचा कि हम इसको यहाँ डाल देंगे, इसको यहाँ डाल देंगे. It's not like that. They are integrated. While you make a judgment, let's say I should not drink and drive, it's both moral and mental. Right? क्योंकि अगर आप पी के चलाते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, तो खुद को भी अगर आप चोट पहुंचाएंगे, गलती से दूसरे को चोट पहुंचा दिए. So you are not just held कि तुमने गलत डिसीजन लिया based on your mental faculty, but also on the moral grounds. Drink and drive is a wrong act. And if you refrain from doing it, you are making no one is stopping you to drink. But if you are drunk, then you book Ola, you do Uber, and also don't fight with that Ola Uber guy. Right? है ना? उसको एकदम गाली गलौच मत करने लगो. Be sober. Drink as much as you can handle. है ना? औकात से ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए. समझ में आ रहा है बात ना? So that is important. But no one is stopping you from drinking. But then you are making these choices in a very cautious manner. You are drinking and you know that that might cause injury if you drive after being drunk, right? Injury to your own self, which might lead to a problematic situation for your family as well as to someone else. है ना? So there are moral and mental question attached to the idea of choice. That's what Mill is trying to say. And the more you will exercise it, the more these faculties will grow. Moral or mental capacity of people, moral and mental capacity will grow. And if it is being exercised by large number of people, let's say, then a society full of highly intellectual people with moral and ethical concern will grow. Right? So that's why individual liberty becomes an important anchor for Mill. And that's why he is a strong advocate of establishing individual liberty in the society, of guaranteeing, of ensuring individual liberty to everyone. समझ में आ रहा है बात ना? इसीलिए आप देखते हैं कि मिल जो है इसका पुरजोर समर्थन करते हैं कि समाज में हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के बाद वो व्यक्ति चुनाव कर सकता है, और चुनने की जो प्रक्रिया है
वो प्रक्रिया आपके मस्तिष्क के इजाफे की प्रक्रिया है, जहां से आपका माइंड अलग अलग चीजों के बीच अलग अलग तरीके के भेदभाव करके, अलग अलग पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करके कुछ चीजें चुनता है। उसके साथ साथ उसमें मोरल कंसर्न भी ऐड करता है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। समझ में आ रहा है बात ना? सो यू शुड बाय थिंग्स ओनली फ्रॉम दो स्टोर्स वेर यू पे GST, राइट? सो समवन विल सेल यू चीप प्रोडक्ट्स saying कि इसमें आपको GST नहीं देना पड़ेगा. Will you buy that? That will be morally wrong, and that will also be wrong because you will not have original bill. So in case if it stops functioning, you will not be able to replace it some, right? So you discriminate ना भाई, 10 रुपया महंगा, but I will buy those product which has GST tag on it. समझ में आ रहा है ना बात? That will also add to the government coffers, है ना? And will be reused in welfare schemes, and that will also give a guarantee to the product which I have bought. An assurance that if this product stops working, then it can be replaced or exchanged or whatever repaired freely in the customer care, whatever service center, and so on and so forth, right? So you make a choice. You see, your choice is informed. That's what mill idea is. A choice that we make in our life is informed by several factors, है ना? It's not something that we exercise in vacuum, right? So for that we need to ensure liberty to everyone. So he who chooses his plan for himself employs all his faculty. He must use observation to see, reasoning and judgment to foresee, activity to gather material for decision, discrimination to decide, and when he has decided, firmness and self-control to hold to his deliberate decision. These are Mill's line. समझ में आ रहा है बात ना? सो आप देखते हैं चीज़ों को, परखते हैं, आप अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फिर आप देखते हैं कि नहीं ये ठीक है, इसमें ड्यूरेबिलिटी है ना, तब आप जाकर उस चीज़ को खरीदते हैं. तो यू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज फॉर बाइंग लेट्स से वन फोन, है ना? सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है, फलाना है, ढिमकाना है, ठिकाना है. व्हाई डू यू बाई सैमसंग? You compare, you ask your friends, you see the review, watch the review. कोई भी प्रोडक्ट बिना रिव्यू देके खरीदते हो? नहीं खरीदते हो ना? क्यों? Because you want to get informed, है ना? So for Mill, emphasizing that what is important is not only what men do, but also what manner of men they are that do it, right? समझ में आ रहा है ना कि आप सिर्फ क्या करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं, कैसे लोग हैं आप, कितना इंफॉर्मेशन लेकर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना? और अगर लिबर्टी है तो आपके पास ये सारा ऑप्शन होता है एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए. समझ में आ रही बात आपको, है ना? सो फॉर मिल, emphasizing that what is important is not only what men do, but also what manner of men they are that do it. ठीक है ना? तो किस तरीके का आदमी है जो उसको कर रहा है. So if you randomly come to the class smoking it will automatically give me a perception that this man is a stupid man, है ना? Though he had choice, but he doesn't know how to exercise his choice. This place is not meant for smoking, right? So it gives an idea about the man and the way he do the thing as well. आप randomly कोई चीज खरीद लीजिए और आप सूझबूझ के खरीदिए, you differentiate, है ना, कि किस तरीके का आदमी है वो, है ना? by the things that you have in your house, let's say in your drawing room. हम लोग जाते हैं, देखते हैं किसी के घर में प्लांट लगे हुए हैं दीवार से, है ना, कहते हो oh this man is quite sensible. कोई वहां पर झूमर टांग देगा बड़ा सा mindlessly. No, झूमर टांगना I'm not saying is a bad thing, but the place is small. You can decorate with lot of let's say eco-friendly products, है ना? That gives an impression of what kind of person he or she is, right? So it gives you the image about the activities of the person as well as the person himself or herself as well, right? So these are important. So as I told you, Mill is a strong advocate of individual liberty, and now you got to know why Mill defends individual liberty, because this leads to
moral and mental enhancement of the person, right? So that will be there, right? So you see the mental and moral side of, the element of choice is important, and that makes individual liberty significant. That needs to be held in every society, Mill talks about, right? Now Mill comes to another idea that what are the kind of liberty then? So Mill says that there are three kinds of liberty that needs to be, ensured to every society. Liberty, freedom of speech, liberty / freedom of speech and expression. Yes, right, which includes speaking and publishing. Yes. ठीक है. The second kind of freedom that Mill talks about is liberty of action. And the third kind of liberty that Mill talks about is liberty of association. So Mill तीन तरीके की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं. स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, बोलने की और अपने आप को प्रकट करने की स्वतंत्रता, जिसमें बोलना और पब्लिश करना दोनों आता है ना. दूसरा है आपके कार्य करने की स्वतंत्रता, एक्शन, लिबर्टी ऑफ एक्शन. पब्लिशिंग, पब्लिश मतलब छापना. इफ यू वांट टू पब्लिश योर व्यूज, यू कैन पब्लिश. Speech is a form of expression, but then there are a lot of other forms of expression. Some of it may be publishing, some of it may be, let's say, painting. But painting also gets published, right? है ना? Poetry, literature, art, कुछ भी आप रखिए उसमें. So whatever form, protest, let's say, it's also a form of expression, right? Criticize government and programs and policies. It's also a form of expression, right? So Mill talks about liberty or / freedom of speech, of expression. Now we are going to study his first part, that is freedom of speech and expression. Now Mill makes an important observation over here. He begins his theory, or let's say his ideas, on liberty of thought and expression, not speech and expression, liberty of thought and expression. We can write speech and thought is like similar. Mill begins with a revolutionary quote, and you all need to note it down. Yeah, freedom of thought and expression, basically. Thought and expression, speech and publication are part of it. Okay, so what is the revolutionary? Mill जो शुरुआत करते हैं इस बात की कहने का, so इसका जो डिफेंस मिल ड्रॉ करते हैं ना, आई हैव ऑलरेडी सेड यू, मिल जो है इन आइडियाज का डिफेंस ड्रॉ कर रहे हैं कि क्यों ये होने चाहिए समाज में, क्यों इसकी महत्वता है, क्यों इसकी प्रासंगिकता है, why it is important, right? So Mill says, if all mankind minus one were of one opinion and only one person were of the contrary opinion, if all, मैं रिपीट कर रहा हूं, if all mankind minus one were of one opinion and only one person
whereof the contrary opinion or opposite opinion, let's say, contrary, CONTRARY, contrary का मतलब समझते हो उत्कर्ष? Yes, opposite opinion mankind would no more justified in silencing that one person. Comma, mankind would be no more justified in silencing that one person. Would be no more justified in silencing that person, that one person, than he, if, comma, than he, comma, this is an important statement by Mill, than he, comma, if he had the power, comma, would be justified in silencing mankind. Silencing the mankind. So what's on the plate? And this single person is of the different opinion. All these students in this class believes that we should not take Ankit sir's class. But this single student is of the opinion that no, I will take Ankit sir's class. Then this entire community will be, तुम अकेले क्या बोल रहे हो, चुप रहो, साइड हो, तुम अकेले साना बन रहे हो, तुम अकेले तेज बन रहे हो, चुप कर, तू बैठ जा, है ना? But Mill says that is wrong. If all minus one is of the one opinion and all others are of the other opinion, this whole lot of class would not be justified in silencing this person. Similarly, if someday, if this single person is in power, then he will also not be justified in silencing this whole class. समझ में आया बात? Relation उस statement का? If all is of the one opinion minus one, then this all is not justified in silencing the one. Similarly, when this single person becomes powerful, let's say someday, or becomes the monitor of this class, he is also not justified in silencing the whole class when he is in power. Right? So he talks about absolute freedom. एक भी ओपिनियन अगर कहीं अलग है, आपको सुनना पड़ेगा, उसकी आवाज आप दबा नहीं सकते हैं. Then he is also not justified in silencing the whole mankind. Let's say if he becomes Modi tomorrow, then he can easily crush the opinion of the people protesting out there. But that would not be justified. ठीक है? So everyone needs to hear and allow others to express themselves. Everyone needs to hear other and allow other to express themselves. No matter how contrary his opinion or her opinion is, vis-a-vis the opinion of the majority, no matter how opposed that person may be or how critical that person is, बोलने तो हमको देना ही पड़ेगा. आवाज नहीं बंद कर सकते हैं किसी की. आवाज बंद करना गुनाह है. लेकिन क्यों गुनाह है? 4 क्विक आर्ग्यूमेंट्स जो मिल लेकर आता है. 4 मेजर आर्ग्यूमेंट्स that why mankind is not
justified in silencing the one person, or not that one person is justified in silencing the whole mankind. Why? Now Mill gives important argument over here. क्या बोले? 4 reasons why there should be complete freedom of speech and expression. You can just crack that idea in this line. ठीक है ना? 4 reasons. Why there should be freedom of speech and expression. Yeah, thought and sorry, yeah, बार मैं speech thought है. Why there should be freedom of thought and expression. ठीक है? सबसे पहला बात है कि जो डोमिनेंट आइडिया होता है वो हमेशा एक क्लास इंटरेस्ट से उठ के आता है. ठीक है ना? और कोई अगर अलग बात कह रहा है तो हो सकता है आगे आपके क्लास इंटरेस्ट को चैलेंज कर रहा हो, तो आपको उसे बोलने देना चाहिए. ठीक है? मिल कहता है कि आपको उसे बोलने देना चाहिए. ठीक है? क्योंकि जो मेजॉरिटी जिस ओपिनियन को रख रही है हो सकता है कि वो सत्य ना हो. ठीक है? जो डोमिनेंट क्लास है, और लेट्स से क्यों किसी एक को बोलने देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये पूरा क्लास जो कह रहा है कि कल हमें अंकित सर का फिल्म देखना चाहिए. ठीक है? लेकिन एक बच्चा है जो कह रहा है कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, तो हो सकता है कि वो पूरे क्लास का ओपिनियन जो है वो सत्य ना हो, ट्रुथ ना हो. ठीक है ना? और अगर उस केस में जब ये पूरे क्लास का ओपिनियन ट्रू नहीं है, तो अगर आप एक अपोजिट वॉइस को दबा देते हैं तो हो सकता है कि आप पूरे जनमानस को ट्रुथ से महरूम करके रख रहे हैं. राइट? समझ में आ रही बात? सो इफ द इंटायर क्लास इज ऑफ द ओपिनियन कि कल कुछ पढ़ाई नहीं होगा, सो लेट्स नॉट टेक द क्लास and let's go to watch movie. But then there is another guy who says कि even कुछ पढ़ाई नहीं होगा लेकिन कुछ तो रिवीजन होगा और टेस्ट भी होने वाला है अगला वीक में. सो क्या पता कल कुछ मोस्ट लाइकेबल क्वेश्चंस भी मिले और उसके ऊपर में सर कुछ बताए भी. सो वी शुड गो टू द क्लास. बट दिस इंटायर क्लास ए यार कल सारा पढ़ाई तो हो गया, अब तो कितना पढ़ाकू बन रहा है, कल टेस्ट सर वैसे भी कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सर ऐसे से कुछ करके टाइम पास कर देंगे. एंड इफ टुमारो इन द क्लास I discuss some of the important questions that I am going to ask you in the test, then what happened? By silencing this person, you see, this whole class was kept aloof of the truth that they were going to get. Now this is a small example, that can be anything, right? कि someone said कि वहाँ के पानी में ना कुछ मिल रहा है, that is not good for drinking. उनको बोलने भी तो नहीं देता है ना, तू भी मत चल, shut up, you should not speak, because we all think like this, right? So let's say you discovered some uranium mixed in the water and said that this causes cancer. But then this whole lot of people will say, अरे यार we have been drinking, बाबा दादा के जमाने से इस कुएं का पानी पी रहे हैं, कोई कैंसर पैंसर नहीं होता है इससे. And then his voice is being silenced. तो भाग यहां से, तू पागल हो गया. And no one pay heed to that voice, but he was saying it something important. And thus he was saying it important, his voice was silenced, and people kept on drinking that water. After 2 years, all of a sudden they realized that 80 people got cancer in that community because of drinking that water. So you saw
that boy whose voice was silenced, by this whole lot of community, costed them the life of 80%. समझ में आ रहा है बात ना? So that is what Mill's primary argument is. So the majority opinion may not reflect the truth and may not benefit the society as a whole. It is more than likely that the suppressed minority opinion is true. सुनिएगा ध्यान से. The suppressed minority opinion, it is more likely that the suppressed minority opinion is true, and those suppressing it will only prevent or deter mankind from knowing the truth. So you are depriving this whole lot of mankind from knowing the truth. Maybe if they know the truth earlier, they will act accordingly and those people would have been saved. लेकिन हमने क्या किया? अरे तुम चुप रहो, तुमको कुछ आता जाता है नहीं, तुम बोलते रहते हो, बैठो तुम यहाँ पे, इतने लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हो, तुम जाए बोल रहे हो अकेला वो सही बोल रहे हो, बैठ तू चुपचाप से यहाँ से. और जब हम उसको बिठा देते हैं वहां पे, तो हम क्या करते हैं? पूरे जनमानस को सत्य से महरूम करके रख देते हैं. आई बात समझ में? तो इसीलिए सभी को बोलने देने का स्वतंत्रता होना चाहिए. नंबर फर्स्ट, सभी को बोलने देने का स्वतंत्रता क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो मेजॉरिटी कह रहा है वो अक्सर सत्य नहीं होगा. ठीक है ना? और उस केस में जब वो सत्य नहीं होगा और जो एक आदमी जो अलग बात कह रहा है अगर वो बात सत्य है, तो मेजॉरिटी उसको ना बोलने देने का मतलब है कि आप मेजॉरिटी को ट्रूथ से डिप्राइव कर रहे हैं. आई बात समझ में? इसीलिए उसको बोलने देना चाहिए. दूसरी बात, जो दूसरा कारण है क्यों उसको बोलने देना चाहिए, सत्य अगर मान लो मेजॉरिटी का कहा हुआ बात सत्य भी है, तो ट्रूथ नीड्स टू बी एस्टैब्लिश्ड. समझ में आ रहा है बात ना? अगर मेजॉरिटी का कहा हुआ बात ट्रू भी है, सो दैट विल गेट फाउंडेशनली एस्टैब्लिश्ड इफ द अपोजिट वन हु इज सेइंग समथिंग इज फॉल्स. नहीं समझ में आया? How can you firmly establish the truth or what is true? By pointing out what is not true. समझ में आ रहा है बात ना? How can you establish something that is true? By eliminating what true is not, or what are those false things, let's say. है ना? So this will add into that club of false and will foundationally establish what is truth and what is held by the community. अब आई बात समझ में कि अगर मान लो कि ये पूरा समाज सही कह भी रहा है, तो ये बात और फाउंडेशनली एस्टैब्लिश हो जाएगा जब हम उसको बोलने देंगे तब ना. और वो गलत भी अगर कह रहा है, तो वो गलत कह रहा है, उससे तो और ज्यादा सत्य जो है स्थापित होगा. सो लेट्स से उस क्लास में वाकई उस दिन कुछ नहीं हुआ और मैंने कोई टेस्ट के क्वेश्चन नहीं बताए, तो आंसर डिस्कस नहीं किया, तो ये जो बात जो मेजॉरिटी कह रही थी तो वो और फाउंडेशनली एस्टैब्लिश हो गया ना. लेकिन वो हुआ कब? जब आप इस अपोज्ड ओपिनियन वाले लोग को बोलने दिए. अगर इसको आप बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे एस्टैब्लिश कर पाएंगे? आई बात समझ में? है ना? So truth will get more foundationally established if we let all kind of opinion to emerge and to express itself. समझ में आ रहा है बात ना? कि what is not true will emphasize more upon what is true. ठीक है? जो false है that sheds more light upon truth ना. ठीक है? So there are 6 number of things which is false. Now this will make true more stronger because true is apart from all these 6 things. समझ में आ रहा है बात ना? है ना? So this will establish the truth more foundationally. So now this is the number 2 why Mill advocates freedom of speech and expression. The first one is
the opinion that the majority is holding might not be true, and in case if we suppress that other person who is opposing that opinion, we are depriving the mankind from knowing or coming closer to the truth. A. B, he says कि even the opinion that is held by the minority is false, that will establish the opinion held by majority as more foundationally, as true. समझ में आ रहा है बात ना? But only when he is let free to speak and express or publish. समझ में आ रहा है बात ना? Okay. ऑफ कोर्स नोट करना है, सब आर्ग्यूमेंट है इसका. ओके द फर्स्ट वन इज I mean, you can write it in your own words. I said that the majority is of one opinion and minority is of other. In silencing the minor, and there is a constant belief that the idea that majority holds the true, right, true opinion. But what in case that the truth this time is with minority, and if his or her voice is being silenced, then what happens? The whole mankind is deprived from knowing what is true, है ना? अब हर एक बार मैं हर एक तरीके से फ्रेम करता हूं ना, तुम फ्रेम करो. इफ द मेजॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन, that the view that they are holding upon is true, is true, and the minority's view or opinion is false. But in case if the minority's opinion, but in case if the minority's opinion becomes true, minority's opinion becomes true, then not allowing him to express freely because his minority, to express freely because he is a minority, would deprive the majority from the truth. क्या? Allowing him to express freely because he is minority. Allowing him to express freely, not but because क्या लिखे उससे पहले, सो बताओ. Then not allowing him to express freely because he is minority would deprive the majority mankind from the truth. From the truth. Right? So the idea is human beings are fallible agent, right? Fallible मतलब उनके बात कोई गिर भी सकते हैं, वो गिरने वाले प्रजाति हैं, fallible, है ना? So उनका द्वारा होल्ड किया गया कोई सर्टेन ओपिनियन जो है वो ट्रू नहीं रहेगा हमेशा, क्योंकि मनुष्य गलतियां करता ही करता है. तो आपको दूसरे को मौका देना चाहिए ताकि आप हो सके संभल सके. समझ रहे बात ना, है ना? आप संभल सके यहां पर. तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट एंड एक्सप्रेशन जो है
वो होना चाहिए समाज में, पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि अगर मेजॉरिटी, इफ इवन इफ द ओपिनियन दैट मेजॉरिटी हेल्ड्स टू बी ट्रू, इज टू बी ट्रू और इज ट्रू, then it will get foundationally established if it is opposed by the contrary or false opinion, right? Even if the opinion that the majority holds is true, but then truth will only get more firmly established if it is opposed by false. हाँ, तुम अपने लैंग्वेज लिखो ना, मैं समझा तो रहा हूं। Even if the opinion that the majority holds is to be true, then allowing the opinions held by the minority to be expressed freely will help, to establish the opinion of the majority more firmly. To express freely will establish the truth more firmly. Firmly. So it is always by, so the idea is what? It is always by negating, the wrong opinions. You establish firmly what is truth. Truth becomes more lively, है ना? And it is not a dead dogma. What happens to truth if it is unchallenged? Truth, even if something is true, but if that is unchallenged, then that truth becomes dead dogma, right? है ना? वो मरा हुआ एक वो रिचुअल के तरह हो जाता है, एक प्रैक्टिस के तरह हो जाता है, एक आइडिया के तरह हो जाता है, ठीक है ना? सो उसमें जान फूंकने के लिए हमको हमेशा उसको निगेट करते रहना चाहिए। समझ में आ रहा है बात ना? दिस इज मिल्स आइडिया। एंड थर्ड, जो मिल सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस ड्रॉ करता है इस पूरे आर्ग्यूमेंट का, वो ये है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड truth as such which is universal and which is beyond time and context. समझ में आ रहा है बात ना? There is no such kind of truth. Truth have changed as time has progressed. समझ में आ रहा है बात ना? So that change can only happen if there is freedom of thought and expression. समझ में आ रहा है बात ना? पहले कभी पृथ्वी जो था वो केंद्र में था, ये भी एक ट्रुथ था। हर एक समाज का अपना सत्य होता है, हर एक व्यक्ति का, हर एक समाज का, हर एक देश का, लेकिन उसे कॉन्स्टेंटली चैलेंज करना पड़ता है, तभी जाकर वो जिंदा होता है। और हर एक दौर, हर एक काल में सत्य बदलते रहे हैं। कभी पृथ्वी जो था वो सभी ग्रहों के बीच में था, केंद्र में था, जो किसी की परिक्रमा नहीं कर, ये सत्य था। कभी यह है कि पृथ्वी खुद एक ग्रह है जो बाकी सभी ग्रहों के साथ मिलकर सन का परिक्रमा करता है। कभी का सत्य ये है। तो सत्य क्या है? सत्य हमेशा बदलने वाला एक चीज है। हर एक युग का एक अपना सत्य रहा है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड फिक्स्ड ट्रूथ। वन कैन नॉट होल्ड समथिंग टू बी ट्रू एंड फिक्स्ड। समझ में आ रहा है बात ना? वन कैन नॉट होल्ड विथ समथिंग एज ट्रू एंड फिक्स्ड। इट हैज चेंज्ड ओवर द टाइम, इट विल चेंज ओवर द टाइम। Every age has its own truth, and how that will come out if we allow people of differing opinions to express their ideas, है ना? They will challenge the truth, and there is nothing called entire truth or entire false. Even a statement is false, but if it carries an ounce of truth,
ounce of truth. The fourth argument that Mill is making. Even if the statement is 99.9% false, but 0.1% of the element in that statement is true, by depriving, him to speak, you are depriving the mankind from 0.1% of truth, which is an ounce, but yet significant and needs to be heard. समझ में आ रहा है बात? So that is why we need to have freedom of thought and expression. These are the reason. समझ में आ रहा है बात? Even an ounce of the truth, अगर वो नहीं निकल कर आया सामने में, तो मिल के लिए वो नाइंसाफी है, क्योंकि फिर आप समाज को इतना ट्रुथ रहने से पाने से महरूम कर देते हैं, और इतना ही ट्रुथ जो है काफी है बड़े से बड़े रेवोल्यूशन को लाने के लिए. आई बात समझ में? एक एप्पल को गिरता देख न्यूटन पूरा फिजिक्स को डेवलप कर देता है, जो हजारों सालों से गिरते आ रहा था. समझ रहे बात ना? एक थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो पूरे दुनिया के नक्शा को बदल देता है. सो वो आउंस ऑफ ट्रुथ भी आना बहुत जरूरी. एक गैलीलियो का डिस्कवरी पूरे दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया. सो यू कैन नॉट and you should not, suppress anyone's voice. कितना भी भलगर हो उसका आइडिया, आप उसको साइलेंस नहीं कर सकते हैं. इसलिए अमेरिका जैसे सोसाइटी में there is nothing called silencing of the opinion in the name of, let's say, any sort of restrictions, reasonable restrictions that Indian Constitution, by the way, grants. And also gives a free weight for all the politicians to make different, laws. Yes, with reasonable freedom of speech and expression with reasonable restrictions. America doesn't. There is no idea. लोग झंडा लेके जला देते हैं. They feel कि हाँ कोई बात नहीं है. But that doesn't mean कि यहाँ पे hurt sentiment. यहाँ पे तो बात पे hurt sentiment. And then there are extremely hate statements which are also made. Hate statements are also made, but then that goes unpunished because of the kind of favor that, that's something which is prevalent. So, truth का जो होता है बहुत multiple faces होता है, ठीक है ना? There is not one significant face of the truth. So, truth needs to emerge out from all the nooks and corners. Right, these are important argument. So true जो होता है हो तो गया. So third में मिल कहता है कि there is nothing called epochal truth. हाँ, epoch का truth या फिर सदी का truth. There is nothing called like complete truth, है ना? And true always comes out in conflict with false. So true and false should always, engage with each other. Complete truth. Truth always emerge in conflict and contradiction to the false. ठीक है ना? हाँ, कोई fixed truth नहीं होता है. क्या? Third statement was simply like that कि every age has its own truth, right? So you cannot say कि ये truth जो है चला आ रहा है सदियों से बरसों से, so you can hold it as a true and do not let others speak. So there is nothing called epochal truth, there is nothing called permanent truth, complete truth. Truth always emerges in contradiction to false, right? So there should be complete freedom, so that the
truth may emerge. And even if the statement is, now fourth one is, even if the false, ठीक है ना? So that freedom of speech and expression, thought and expression should be allowed, you know, because yes, so that is also one part of it. That's fourth argument. False, yes. So so contradiction to false. So you always need to provide spaces to all kind of argument, so that, you know, truth may emerge, right? And finally, Mill suggests that there is nothing called false or complete true. You know, there are certain ounce of truth even within the false statement. So if you do not let that to come up, you know, you are again not letting the mankind, you are depriving the mankind from that ounce of the truth as well. So these are the four major arguments that one can, you know, extract from Mill. There is nothing called purely false. There remains an ounce of truth even in false. So if you do not let that to come up, you are again depriving people, mankind, from that ounce of truth. क्या नहीं करना है? लिबर्टी ऑफ एक्शन. नहीं, इसको तो करा ही देते हैं पूरा. अब तुम भी इतना दूर से आए हो, पढ़ लिख के जाओ, ठीक है? समझ में आया? अरे देर आर बाबा, इधर यू फोकस, यू नो. देखो ये पूरा फॉल्स मान ली, इसके अंदर में एक आउंस ट्रूथ, एक आउंस ट्रूथ है. तो जब तक आप इसको नहीं निकलने देंगे, तब तक आप सत्य नहीं निकलने देंगे. सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट कोई चीज फॉल्स है. यू ऑल शुड वॉच अ मूवी, बाय द वे. कल परसों जब भी आना वीकेंड्स में, 12 Angry Men. It's free. YouTube. It's also available on all the torrent sites that you can access. 12 Angry Men. Right? ये फिल्म देख के आना है. क्यों? On write an essay on this movie by bringing in Mill's argument of freedom of thought and expression. Right? So write an essay, write a review of this movie, by the way, but don't copy and paste, because I'll get from where you are copying. Write a review of this of the movie 12 Angry Men. ठीक है? By, you know, roping in ideas of freedom and ideas of thought and expression pronounced by Mill. ये क्लास में बच्चों को असाइनमेंट में दिया जाता था. या So you should write to understand what an ounce of truth means. समझ गए? समझ गए? बताओ क्या होता है? So इस फिल्म का प्लॉट बताता हूं. They all are 12 angry men are jury members. जूरी मेंबर पता है ना, पहले कोर्ट में होते थे, राइट? And now they are supposed to make a decision on a boy who is almost proved to be criminal.
अरे रुस्तम नहीं है यार, तुम कहाँ हो अभी? क्लास फिल्म है, क्लास फिल्म है। इसके ऊपर में एक फिल्म बनी है हिंदी में, एक रुका हुआ फैसला, जो पंकज कपूर की फिल्म है, हिंदी में अगर देखना चाहते हो तो। बट यू बोथ कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड ओरिजिनली दिस मूवी इज अ क्लासिक। 1950s 60s का सेटिंग है इस पूरे फिल्म का। एक कमरे में अमेरिका में गर्म हवा में, गर्म मतलब गर्मी के मौसम में बना हुआ फिल्म है। सो ऑल ऑफ देम लाइक 11 मेंबर्स अग्री दैट ही इज अ क्रिमिनल एंड ही नीड्स टू बी punished, but one man differs. और ये पूरा फिल्म उस बंद कमरे में 2.5 आवर के कॉन्वर्सेशन का है कि हाउ दिस वन मैन proves 11 member wrong, and then all of them unanimously decides the boy is innocent. But he had a doubt, and with a doubt this entire conversation begins, and this is all about conversation. ये पूरा शुरू होता है कोर्ट रूम से, तुरंत घुस जाता है कमरे में सारे लोग, एंड द रूम इज लॉक्ड, एंड नाउ दे हैव टू डिसाइड. दे कीप ऑन स्मोकिंग, दे कीप ऑन deliberating, and for 18 or 20 long hours deliberate, and then they come out of the room wins. But the kind of engagement that goes into, all of them are prejudiced. अरे he just slum में रहने वाला is a murderer होता है. Later on you will find out that he had a very bad relation with his own son. So kind of prejudices that shape our truth. Why there is requirement, need for the challenge, for the challenging opinion, you will come out in this movie. So both of you, should go and do that exercise. Write a review of this movie and then come. Otherwise don't come. Spend some time watching movie as well. That will give you good insight of the concept of mill. You will never forget J.S. Mill then. लिबर्टी ऑफ एक्शन करते हैं, फिर रेस्ट करेंगे आज के क्लास को. व्हाट इज लिबर्टी ऑफ एक्शन? ना, आई नो. लिबर्टी ऑफ एक्शन. मिल आर्ग्यूज, राइट डाउन. ऑन लिबर्टी में तीनों एलिमेंट हैं. एक पार्ट of on liberty deals with freedom of thought and expression, the other part is of with this, and third part is of with other. The second facet of Mill's freedom is liberty of freedom of action, where Mill argues the sole end for which, so the sole end, SOLE, soul, इकलौता, the sole end for which mankind are warranted individually or collectively is interfering in the liberty of action of others. In the liberty of action of others, if their action is self-regarding and not other-regarding. The sole end for which mankind is warranted is interfering in the actions, what I said, if their action is self-regarding and not other-regarding. Yani, not other-regarding. Self-regarding and other-regarding. बाद में लिखना, अभी तुम आइडिया समझो. मिल कहता है कि मैन इज सोवरेन ओवर हिज माइंड एंड बॉडी. ही नोज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर हिम. सो ही शुड बी लेट फ्री टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू in order to raise his personality. And a man or a society is not justified in interfering into that man's action
if his actions are self regarding and not other regarding. आई बात समझ में? क्लियर है कि आप जानते हैं आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है. सो आपको फुल फ्रीडम होना चाहिए कि आप अपने एक्शंस को जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे परफॉर्म करना चाहते हैं आप करिए. अगर आपका एक्शन आप तक ही सीमित है, उसके इंपैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप तक ही सीमित है, तो किसी को ये इजाजत नहीं है कि वो आके आपके उस एक्शन को परफॉर्म करने से रोके. आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये अच्छा है या बुरा है आपके लिए. Only when your actions become other regarding, it start to create nuisance for other or interfere into the liberty of other, then your actions should be curtailed. Society is allowed to intervene, other people are allowed to intervene. For instance, no one will suggest you कि तुम क्यों शराब पीते हो. You drink as much you want to drink. But after drinking, if you want to, create some nuisance. Let's say if you are partying after 10 playing music loud and, with full noise, full volume, it might create trouble for other who are office goer and wants to sleep. So they also have the freedom to sleep. Right? So then your action of drinking and listening to music is not something which is self-regarding. It has intervened, it has already, trespassed the domain of others' freedom and has become other regarding. Then the society would be justified to knock at your door and saying that भाई साहब वॉल्यूम थोड़ा कम करिए, नहीं करिएगा तो पुलिस को बुला दे. ठीक है, आई बात समझ. लेकिन अगर आप पी रहे हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं, तो किसी की औकात नहीं है कि आकर आपसे सवाल पूछे कि आप क्यों पी रहे हो. भाई आप पी रहे हैं हल्के वॉल्यूम में, अगर आप गाना सुन रहे हैं जो आपके रूम तक ही मौजूद है, तो कोई आकर आपको नहीं कहेगा कि आप क्यों वो गाना सुन रहे हो. जब तक आपके एक्शंस आप तक ही लिमिटेड हैं, तब तक आप फ्री हैं, आप कोई भी एक्ट को परफॉर्म करिए. कोई कहेगा ही कि शराब पीना बुरा है, मिल कहेगा हाँ बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मैंने भी उसको भी कहा है. इसीलिए तो हर एक शराब के बोतल में सब इंफॉर्मेशन डाला हुआ होता है. उसके बाद भी अगर तुम पीते हो तो तुम्हारा दिक्कत है. हर एक सिगरेट के डब्बा के ऊपर में लिखा होता है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर. इट्स ऑलरेडी अ वार्निंग. नाउ दिस माइट ऑकर टू यू कि सर ये सिगरेट पीने से, शराब पीने से तो कैंसर होता है. गवर्नमेंट क्यों बेचती है? गवर्नमेंट इसलिए बेचती है क्योंकि गवर्नमेंट लिख देती है कॉशन, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. बट इवन आफ्टर दैट इफ यू आर मेकिंग योर चॉइस, यू आर फ्री टू मेक योर चॉइस. बेचे ही ना क्यों? बिकॉज अगर मैं पीना चाहूं तो बेचने से ज्यादा अच्छा है कि आपको बता देना. नाउ इफ यू आर अवेयर दैट स्मोकिंग कॉजेज कैंसर बट स्टिल डू इट, देन यू विल पे द प्राइस. बट नो वन इज रेस्ट्रिक्टिंग यू नॉट टू डू इट. समझ में आ रहा है बात ना? है ना? सो दैट इज वाई यू सी देयर इज कॉशन लिखा हुआ होता है, दैट यू शुड बी अवेयर. So this is the idea of liberty of action. If your actions are self-regarding, you are free to do whatever you want to do. No one will come and stop you. But you should always think that your liberty ends where others begin. समझ में आ रहा है बात? So this is liberty of action for you. Your liberty ends where others begin. मतलब अदर दूसरे या अदर नहीं, योर लिबर्टी भी, आपका लिबर्टी खत्म होता है जहां से दूसरे का लिबर्टी शुरू होता है. आपका लिबर्टी वहीं खत्म हो जाता है जहां से दूसरे का लिबर्टी शुरू होता है.
end, end, where others begin, जहां से दूसरों का शुरू होता है। भाई किसी को सोना है और आपको गाना सुनना है, जोर से गाना सुनना है, तो आपका वहां पे खत्म हो जाता है और जहां से दूसरे का सोने का 10 बजे के बाद टाइम शुरू हो जाता है। समझ में आ रही बात ना? So this is liberty of action. Self-regarding action, there are two kind of action that we perform, self-regarding action and other regarding action. While your action are self-regarding, no one can intervene. So this is called non-interference. Non-interference theory of Mill, liberty, non-interference. Mill's liberty, non-interference. Non-interference, जहां से कोई दूसरा आकर आपको हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, राइट? इसको पहले समझो। यू अंडरस्टूड नॉन इंटरफेरेंस? हाँ, आई एम कमिंग टू दैट स्टेटमेंट, डोंट वरी। सो नॉन इंटरफेरेंस थियरी, राइट? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, you are complete free to make choice. Other regarding, but this people are or society can intervene if your action are other regarding. क्या है स्टेटमेंट?